Alright, hello everyone, welcome back to my YouTube channel. And today in my video we are going to learn about chapter number 7, periodic table. In my last video we completed chapter number 3 and we actually shifted back to chapter number 7 because the chapter 1, 2, 3 and 7 are interconnected and they're all about periodic table. Alright, so that's why we shifted back to chapter number 7 because they're interconnected. Today, one of the first elements that we're going to learn about is how elements are actually arranged in the periodic table. So, we should know that in an periodic table, I don't have a periodic table right now to show you guys, but in my next video, I'll make sure that we have one. So, let's just learn a bit about periodic table. You guys have seen periodic table. So, elements are actually arranged in a periodic table according to what? According to the proton number. In the chapter number 2 or 3, we have learned about proton number, right? So, elements are actually arranged by proton number. Like, for example, we have hydrogen, which has one, so it's like on. Then we have helium, and then we have lithium. So, they all are arranged according to their proton number eventually. And the proton number is quite important, and because that's what identifies an element or an atom, right? So to move further, we should know about periods. What are periods in a periodic table? They're actually rows. Apne, if you guys have learned Excel at Excel, yeah, if we talk about rows and columns, so periods are the rows. It is very important in a periodic table because it actually determines, or you can say tell us, how many shell an atom has. ठीक है, एक बेस्ड ऑन दिस, ठीक है, सो इट्स इवेंचुअली बेस्ड ऑन दिस. एक एटम कहते हैं कितने शेल्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास बेस करता है ऑन पीरियड्स. फॉर एग्जांपल, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल. वी हैव lithium, right? Lithium की अगर हम electronic configuration करें, so we know there's 2 and there's 1, and if we see that is in the group, or you can say it is in the row 2, row number 2. So the row number 2 tells us it's going to have 2 shells, and that's how we know that it is going to have 2 shells, and that's why the first one goes like here and the second one is like here. So that's lithium for you guys, and it has 3 electrons. So periods and rows eventually tell us कि हमारे पास उसके कितने शेल्स होने वाले हैं, ठीक है. अब हाइड्रोजन जैसे अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन जो है उसके पास कितने होते हैं, वो पहले रो में आता है, तो उस वजह से उसको क्या कर, उसके पास एक, हमारे पास क्या होता है, शेल होता है. अब ऐसा नहीं है कि दे डोंट हैव, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसको कंप्लीट करने के लिए 2 शेल्स नीडेड थे, तो उन्होंने 2 यूज़ किए. इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, बट ओनली 2 आर फिल्ड बाय, बिकॉज इट्स लाइक इम्पोर्टेंट, लाइक 2 इम्पोर्टेंट इसलिए होते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर इनके पास होते हैं, पर क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमारे पास 3 है या कम है, वो फिल हो जाते हैं 2 में, तो उनको और की नीड नहीं होती है टू शो इट इवेंचुअली. उसके बाद देन वी हैव वन थिंग दैट्स कॉल्ड it's called groups in periodic table. What are groups eventually? Groups are more likely हम बोल सकते हैं कॉलम, ठीक है. एक हमारे पास होती है रो, एक होते हैं हमारे पास कॉलम. सो हमारे पास इवेंचुअली 7 हम मानते हैं कि हमारे पास ग्रुप्स होते हैं, 8 भी होते हैं इफ़ वी काउंट द नोबल गैसेस. तो 7 हमारे पास होते हैं. इट स्टार्ट्स फ्रॉम अल्कली मेटल टू द हेलोजन गैसेस, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो ग्रुप्स होता है ना, इट टेल्स अस अबाउट द वैलेंसी, ठीक है. टेल्स अस अबाउट व्हाट? इट टेल्स अस अबाउट द वैलेंसी ऑफ एन एटम, ठीक है. व्हाट डू यू मीन बाय वैलेंसी ऑफ एन एटम? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिथियम है, ठीक है, वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, ठीक है. इसकी वैलेंसी हमारे पास 2 and 1 है, ठीक है. अब ये ग्रुप 1 की कौन से ग्रुप के अंदर आता है? इट कम्स इन ग्रुप 1. तो इसका मतलब कि भाई ये एक इलेक्ट्रॉन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज़ करने वाला है, ठीक है. सो दैट्स हाउ लिथियम वर्क्स. एंड इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 6, ठीक है, which has sulfur in it. So we know that sulfur is going to lose 6 electrons. We know that group 3 has aluminum, and we know that aluminum is going to lose 3 electrons,
ठीक है. सो इवेंचुअली ग्रुप्स टेल अस कि उसकी वैलेंसी क्या होने पाती है, उसके पास कैटाइन बनेगा, एनाइन बनेगा, बताता है कितने चार्जेस उसके ऊपर होंगे. तो हमें ग्रुप्स एंड पीरियड्स इसलिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू नो एंड टू लर्न. हमारे पास इसके अलावा पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स 1 to 20 हमें फ्रॉम हाइड्रोजन टू कैल्शियम जो हमारे पास है हमें आने चाहिए. हमें उनके बारे में सब पता होना चाहिए. बट हमारे पास जी 21 टू कुछ हमारे पास यूरेनियम स्कैंडियम टू यूरेनियम हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स आ जाते हैं जो हमारे सिलेबस का थोड़ा सा पार्ट है. लाइक हमें इनके बारे में इतना नहीं पता होना चाहिए, बस हमें इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और बॉन्डिंग्स के बारे में पता होना चाहिए और ये कैसे रिएक्ट करते हैं. अब जैसे कि हमारे पास कैल्शियम है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इट हैज़ लाइक 20. सो 2 गया 8 and 2, so it has 2, so it's going to lose 2 electrons. ठीक है. एंड इट इज़ द बिगेस्ट एटम दैट वी शुड नो अबाउट. इसकी कॉन्फ़िगरेशन से लेकर उसकी रिएक्टिविटी हमें पता होनी चाहिए. यू नेवर नो अबाउट एग्जाम्स, राइट. Now we are going to discuss the very last thing of our videos, which are noble gases. We have already discussed about noble gases in my previous videos, but today we're going to look more. So noble gases are usually known as inert gases. Why? Because they have stable electrons, or you can say they have stable shells. They do not need any sort of electrons. They don't make any bonds. Why they don't make any bonds? Because they're stable. They don't want an atom or an electron, or they don't want even to give an electron as well. So it's very nice, right? So they're like stable. They are someone who is so peaceful and they do nothing eventually, right? So noble gases have inert, they're called inert gases. They have complete shells, or what do we call it, they have valence shells. Within that हमारे पास अगर नाम ले लेते हैं, we have helium. Helium is usually used in, you should know the uses of this because you never know. It's used in balloons, right? And later if we talk about neon, it's used for what? Neon is actually used for neon lights that you see, and that's like a color that it's not in liking of everyone eventually. एंड देन हमारे पास आते हैं आर्गॉन. आर्गॉन जो है ना, इट्स एक्चुअली यूज टू मैन्युफैक्चर द स्टील. ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग द स्टील के लिए हमारे पास आर्गॉन यूज़ होता है. आर्गॉन एक और चीज़, इट इज़ द थर्ड मोस्ट abundant gas in the world. So third most abundant gas in the world है, and this is a fact that you should know. Okay. एंड आर्गॉन इसके साथ हमारे पास इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में यूज़ होता है. इलेक्ट्रिकल बल्ब्स में क्यों यूज़ होता है मैं बताती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव दिस बल्ब एंड दिस इज़, ये होता है ना, इसको कहते हैं हम टंक्शन. ठीक है, टंक्शन जो होता है ना, ये हमारे पास बना होता है किसी चीज़ का, आर्गन का. क्यों? अगर ये हमारे पास आर्गन जो है, ठीक है, अगर ये आर्गन का नहीं होता है, किसी और का किसी और मटेरियल का होता, तो ऑक्सीजन जो है ना उससे रिएक्ट कर जाता और हमारे पास कोई धमाके वमाके हो सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास आर्गन से फिल्ड होता है ताकि ऑक्सीजन से इसका नो रिएक्शन, मतलब कोई रिएक्शन ना हो, इस वजह से इट्स यूज, आर्गन इज़ यूज. सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो. वी लर्न इवेंचुअली कि भाई हमारे पास हमारे एलिमेंट्स का क्या काम है, हमारे एलिमेंट्स में पीरियड्स और ग्रुप्स का क्या काम है, और फिर हमने पढ़ा कि भाई वो वैलेंसी कैसे देखते हैं, वो प्रोटॉन नंबर कैसे देखते हैं. लेटर वी लर्न मोर अबाउट नोबल गैसेस. वी लर्न कि हमारे पास जो 3 मेन नोबल गैसेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, वो किस चीज़ के काम आते हैं. इन माई नेक्स्ट वीडियो विल लर्न अबाउट ट्रांजिशन मेटल्स एज वेल. सो बी देयर एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.